નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં આપણે દ્વિતીય સત્ર શરૂ કરી રહ્યા છે. નવા વર્ષની દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને હાર્દિક શુભકામનાઓ. અને હવે આપણે દ્વિતીય વર્ષમાં આપણો કોર્સ જોઈ લઈએ. પત્ર એવં ડાયરીથી સ્ટાર્ટ થશે કે ઉલઝન સુલઝન સુધી આપણે 9 પાઠ જોવાના રહેશે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને નવા વર્ષના હાર્દિક અભિનંદન સાથે આપણે पत्र एवं डायरी नो परिचय मेळवीए. जीवन में लेखन का बहुत महत्व है. हमसे दूर रहने वाले स्वजन, मित्र, संबंधी तथा व्यावसायिक अधिकारियों से पत्र लिखना जरूरी है. आज के इंटरनेट के युग में पत्र तो अब हम नहीं लिखते, लेकिन पहले के ज़माने में सभी पत्र व्यवहार ही करते थे. लेकिन आज के युग में पत्र व्यवहार तो अब करते ही नहीं हैं, लेकिन हमें उसकी समझ लेना जरूरी है. आज के युग में मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फ़ोन का उपयोग संदेशा व्यवहार के लिए अधिक हो रहा है. फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है. पत्र द्वारा अपनी बात सरलता से कम दामों में कहीं भी भेजी जा सकती है. अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, शिकायत करने के लिए, आवेदन, निमंत्रण, प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही उपयोग हो सकता है. हम किसी को भी पत्र भेजें तो कैसे लिखना चाहिए? आवेदन करना है, कहीं किसी संस्था में आवेदन करना है तो हमें कैसे लिखना है? किसी को निमंत्रण भेजना है कोई भी प्रसंग के लिए तो कैसे भेजना है? कभी किसी को प्रार्थना करनी है, फिर किसी को शिकायत पत्र करना है तो कैसे लिखा जाता है? तो अलग अलग पत्र हमें किसे संबोधन करना है, कैसे करना है, सभी इस पत्र एवं डायरी में हम लिखेंगे. डायरी कब कैसे लिखी जाती है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन किसी को डायरी लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, तो डायरी कैसे लिखी जाती है वो भी हम इस पाठ में देखेंगे. पत्र लेखन पहले हम देखते हैं उसमें निमंत्रण पत्र यानी निमंत्रण पत्र एमां भावात्मक अनुवाद कई रीतना थाय. तो जन्मदिवसे हाजर रहवा मित्रने निमंत्रण पत्र આપણે ગુજરાતીમાં તો શીખ્યા છે, એવી જ રીતે આપણે હિન્દીમાં પણ જોવાનું છે. તો પહેલો છે આપણી પાસે નિમંત્રણ પત્ર, એટલે કોકને આપણે આમંત્રણ આપવું છે તો કઈ રીતે આપી શકીએ એ આપણી પાસે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં બંનેમાં જોવાનું છે. બરાબર. પછી બધાઈ પત્ર કઈ રીતના લખવાનો છે, કઈ રીતે લખી શકાય, આશ્વાસન પત્ર કઈ રીતે લખી શકાય, બરાબર, પ્રાર્થના પત્ર કઈ રીતે લખી શકાય, અનુમતિ પત્ર કઈ રીતે લખી શકાય. કોઈ હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય વિદ્યાર્થીઓને પોતાના પિતાજી સાથે અનુમતિ લેવી છે તો અનુમતિ માટે આપણે કેવો પત્ર લખવા જોઈએ એ પણ આપણે આ પાઠમાં જોવાનું છે. સાથે સાથે ડાયરી લેખન કઈ રીતના કરવાની છે. તો ડાયરી એક અંગ્રેજી શબ્દ છે, बराबर, परंतु डायरी में व्यक्ति अपने जीवन की प्रतिदिन की घटनाएं लिखते हैं. डायरी द्वारा व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों और घटनाओं की जानकारी उस व्यक्ति के ही शब्द में प्राप्त की जा सकती है. डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है. तो हम इस पाठ में कई पत्र और डायरी. तो डायरी किसका व्यक्ति रोज़मर्रा लिख सकता है, फिर अपने ही शब्दों में प्रतिदिन यानी रोज, साप्ताहिक यानी अठवाडिया 7 દિવસ પછીની એક સાથે લખી શકે. પાક્ષિક પણ લખી શકે છે, અથવા માસિક પણ. પાક્ષિક એટલે 15 દિવસની અને માસિક એટલે 30 દિવસની સાથે. તો આ રીતના આપણે ડાયરી લેખન પણ કરી શકીએ છીએ. તો આ બધું આપણે આ પાઠમાં જોવાનું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી પાસે આ જ આપણો અભ્યાસક્રમ છે, એના આધારે પત્ર એવં ડાયરીની માહિતી મેળવીશું. સાથે સાથે કચ્છની સૈર પણ કરીશું. મત બાટો ઇન્સાન કો કવિતા જોઈશું. કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એમના જીવનની થોડી વાતો, દોહા કબીર અને તુલસીના દોહા જોઈશું. તૂફાનો કી ઓર જો
हार की जीत हंसना मना है और उलझन सुलझन। तो द्वितीय सत्र में हमें यह सब का पाठ और कविताएं सीखनी है। तो सभी विद्यार्थी मित्रों को नए साल की शुभकामनाएं के साथ हम अपना प्रथम चैप्टर पत्र एवं डायरी, जिसमें पत्र का परिचय और डायरी का परिचय हमने आज लिया है, विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।